Good afternoon. Hello and welcome. On behalf of Department of English, Maharaja Sri Ramchandra Bhanjadev University, Keonjhar campus, I welcome all our audience and eminent speakers to this online book release and discussion on author Basudev Sulani's latest novel, Masani Sahar Delhi. Uh, we are fortunate to have among us a panel of very eminent scholars and creative writers. We have with us the author of the novel, Dr. Sulani himself. We have Professor Sumanyu Satpathy of Delhi University, Professor Rajkumar of Delhi University, eminent poet Bhima Prusti, and a short story writer Bhima Prusti, and a renowned poet Manwa Das. Without further ado, we shall start. So we'll first release the book online, and then our speakers will speak one after another. So I request our panelists to please show copies of their book on the screen to mark the virtual release of the book. So this is the book. As you can see, it's called Masani Sahara Delhi. It's published by Vishwamukti Prakashan Bhubaneswar. The book has a beautiful cover which has been designed by somebody who's himself an eminent poet. Jayant Parmar is also an artist. He's designed the cover. The book has a wonderful story. I would not like to take up the time talking about the book. Our panelists will throw light on the book and talk about the ways in which this book is important and the wonderful and moving story that it presents to us. For those who are looking to buy a copy of the book, they can find it with the publisher in Bhubaneswar. It's also available online. Uh, we are very happy that for today's discussion we have with us the author himself, Dr. Sulani. And for those of us in Odisha and even outside Odisha, Dr. Sulani hardly needs an introduction. By profession, he's a veterinarian, but that is only incidental. Incidental to the accomplishments of a man who's an author who has to his credit 8 books of poetry collection, 6 collections of essays, has written 2 novels. The latest, of course, is Masani Sahara Delhi, which we are discussing today, but he's also published another novel. It was published in 2013, if I'm not mistaken, called Poda Podi. He's been invited to several platforms. His books are taught, his poems especially are taught in several universities, have become part of syllabi across universities in India and outside India, in Europe and elsewhere. So thank you, sir, for joining us. We start the discussion with our first panelist, Professor Sumanyu Satpathy. Professor Satpathy is former professor and head Department of English, University of Delhi. He is professor of eminence at K.R. Mangalam University. He is the author of several research papers and books, including The Ninth Rasa, Reading Literary Cultures, Southern Post-Colonialism, and most recently, he is the author of a very important book called Will to Argue, which was published by Primus in 2017. It's a book that every scholar has to refer to, has to read. Every scholar who's interested in Odisha in particular, and anyone who's interested in the broad field that is South Asian studies. He's also been a visiting faculty to several universities in and outside India, particularly to Spain and to Latvo in Australia. He was formerly a fellow at Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. I'd also like to take this opportunity to tell our viewers that Professor Satpathy has also been my teacher at University of Delhi, as has been Professor Rajkumar, who will be speaking after Sumanyu sir. I welcome you, sir. Uh, Kindly begin with your talk. Thank you. बंधुगण आपण मानकु ओ ई मंचस्थ साथी वक्ता मानकु विशेष करी एकदा सहयोगी प्रोफेसर राजकुमार को मोर सादर प्रणाम। मसाणी सहर दिल्ली रु मु सुमन्यु सतपथी कहूची। कोविड रो कोकुआ भय मध्यरे आजि भली किछि खुशीर अवसर आम्भ मानकु गोटे वर्षरु ऊर्ध्व समय हेला घरे थाई कार्यरत रहिबार सुजोग देइछि।
जो आयोजक माने मझिरे मझिरे बौद्धिक आदान प्रदान प्रक्रिया द्वारा आमर चित्त विनोद करुछंती ओ आमर मानसिक कसरत ओ तत्परता बजाय रखिछंती सेमानंकु कृतज्ञता जणाउछि। हाँ, गोटे प्रारंभिक चेतावनी। अध्यापक जीवन में मु उपन्यास अपेक्षा भल कविता पढ़िबा और पढ़ेबा बेसी पसंद करी आसुछि। अध्यापना जगत रे यह एक व्यतिक्रम कहा जाई पारे, कारण विश्वविद्यालय अधिकांश सहकर्मी माने उपन्यास पढ़ेबा पई निज मध्यरे रीतिमत युद्ध करती। से युद्ध रे शामिल नथिया फल रे जीवन रे मु अल्प मात्र उपन्यास पढ़ाई छे। तेणु आजिर वक्तव्य त्रुटिपूर्ण हेले आश्चर्य होबार नुहे। आउ गोटे कथा हला जे मु वासुदेव सुनानी को कविता वासुदेव सुनानी को कविता जगत सहित बेस परिचित। सेही कारण सेथिरु जात होइतिबा कौतूहल वशत तांकर प्रथम उपन्यास पढ़ा पढ़ी पढ़ितिली। मांकड़ कुंभीर गल्प मर्मरे यह भावी जे लोकटा एडे भल कविता लेखुची तो गद्य साहित्य केमिति लेखुची देखे। भाग्यर विडंबना आज मोर वक्तव्य तांकर नुआ उपन्यास उपरे ही आधारित। सते जेमति सुनानी कहउचंती, मोर प्रथम उपन्यास टी न पढ़ी जो अपराध करिथिलु एबे शास्त्री हिसाब रे मोर 400 पृष्ठार द्वितीय उपन्यास टी पढ़। या माने नुहे जे ए दायित्व पाई मु खुशी, ए दायित्व पाई मु खुशी नु, बरं एपरि चमत्कार उपन्यास टी पढ़ी मु एते मात्रा रे आनंद विह्वल जे दायित्व टी गोटे उपभोग्य शास्त्री हिसाब रे ग्रहण करि। आशा मोर वक्तव्य शेष होला बेलकु आपण माने ए मंतव्यर यथार्थता बुझी पारथिबे। तेबे ओडिया साहित्य जगत रे चहल पकाइला भली ए प्रकाशन पई प्रथमे प्रकाशक सुधीर मौडमणि एवं लेखक बंधु वासुदेव सुनानी उभय को बहुत बहुत अभिनंदन जनाउछि ओ उपन्यासटी को पढ़िबा को सुजोग देइथिबारु सेमानंकु धन्यवाद मध्ये जनाउछि। मोर मने हुए मसाणी सहर दिल्ली उपरे समालोचना करिया व्यक्ति मानक मध्यरे मु प्रथम। ए विरल सौभाग्य देइथिबारु सभार आयोजक माने विशेष करी छात्र बंधु तरुण अध्यापक शाश्वत पंडा मोर धन्यवाद। प्रथम महायुद्धर सुप्रसिद्ध इंग्राजी कवि विल्फ्रेड ओवेन को बहुचर्चित एक पंक्ति मन पड़ुची, जहाँ मो भंगा ओडिया अनुवाद रे एही परि सुना दिबो। मो विषय वस्तु है युद्ध एवं युद्ध रे निहित अनुकंपा, सेही अनुकंपा रे ही थाए कविता। एही दलित साहित्यिक एही कथा को सामान्य बदलाई कहि पारंती, मोर विषय वस्तु है जातिगत वैषम्यता, तज्जनित अन्याय एवं ता विरुद्ध रे उत्तोलित स्वर, सेही स्वर ही प्रकृत साहित्य दलित साहित्य। तेबे मो मतरे कोनोसी नारी कवि को नारी साहित्य मध्यरे दलित कविता को बा उपन्यास को केवल दलित साहित्य हिसाब रे किंबा एक आदिवासी लेखा को आदिवासी साहित्य जगत रे सीमित न करी समग्र साहित्य जगत रे तार स्थान निरूपण करबा हेउची जने बुद्धिमान समालोचकर कार्य। एहा द्वारा से लेखक और लेखा तथा भावी पाठक ए समस्त प्रति गोटे किसम नैतिक दायित्व तुलाय बोली मु भावे। यह संपर्कित आउ गोटे कथा हला, एबे दलित साहित्य लेखक माने पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र अनुजाई तांको साहित्यर मूल्यांकन करा न जाऊ बोली भाबुचंती। ता बदल रे तांको निजर मानदंड अर्थात दलित एस्थेटिक्स बा सौंदर्य शास्त्र अनुसार विचार करिवा उचित बोली कहंती। सेमानक पई विरोधाभासी राजनैतिक अभिव्यक्ति मध्यरे ही काव्यिक सौंदर्य निहित। मो मतरे किंतु वासुदेव सुनानी हुंतु बा अखिल नायक हुंतु, एमानक कविता उपन्यास जे कोनोसी भारतीय भाषा साहित्य जगत रे उच्च कोटिर बोली विवेचित हो, एतरे संदेह नै। कहिबा बाहुल्य मसाणी सहर दिल्ली उपन्यासटीर ढांचा दिल्ली उपरे पर्यवेसित। जदियो अनेक ओडिया उपन्यास किछि काल्पनिक घटना कलिकता रे घटिछि ओ केतेक क्षुद्र गल्प मध्य दिल्ली महानगर जीवन को छुईछि, सुनानी सद्य प्रकाशित उपन्यास बोध हुए प्रथम विस्तृत ओडिया उपन्यास जहा कि देशर राजधानी को नहीं दिल्ली को पृष्ठभूमि रे रखिथिबा इंग्राजी उपन्यास कथा कहिले मने पड़े अहमद अली ट्वाइलाइट इन दिल्ली, अनिता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे, नयनतारा साइगल रिच लाइक अस, खुशवंत सिंह दिल्ली ए नोवेल इत्यादि। एथि मध्यरु अधिकांश उपन्यास गुड़िकर चरित्र माने उच्च बा धनी स्थल रे कुख्यात माफिया समाजर एभली दुनियार लोक जहा संगे पाठक निजको बा निज जीवनर अभिज्ञता को सहजरे जोड़ी पारे नहीं। निकट अतीत रे अंतर्जातीय स्तर रे
पुरस्कृत होइथिबा अरविंद आदिकांको व्हाइट टाइगर रो अनेक काल्पनिक चरित्र और घटना मान मध्य दिल्ली रो यार मुख्य अन्यान्य किछि चरित्र दरिद्र अवहेलित जाति और श्रेणी रो जो माने कि पेट पाटना पाई निज निज गाँ रु दिल्ली चली आछंती जोंति पाई से माने बेस चिन्हा चिन्हा लागंती सुनानी को उपन्यास रे मध्य प्राय समस्त चरित्र आम भली पाठकों सामाजिक परिसर मध्यरु आसीचंती सुनानी को दिल्ली सहर उपन्यासटीर शिरोनामा को बेखातिर करी निर्जीव पाषाण सहर भावरे देखा न दे देखा दिए एक जीवंत मुख्य चरित्र भावरे उपन्यास वर्णना शैली गोटे दृष्टि अरविंद आदिकांक उपन्यास शिल्प कौशल सांगरे मिशुची कारण आदिका गल्पर घटनावली मुख्य चरित्र बलराम ईमेल जरिया फ्लैशबैक माध्यम पाठक को जोगाई आलोच उपन्यास अनुराग चरित्रटी एक सूत्रधर भूमिका निभाउची और मुख्य चरित्र राम दुलाल सहित कथोपकथन जरिया मूल गल्पर क्षीय को आगक बढ़ाउची फ्लैशबैक टेक्निक माध्यम अनुराग निजे एक वर्णनाकारी होइतिले मध्य उपन्यास से एक बाह्य वर्णनाकारी द्वारा संचालित हेउची बाह्य वर्णनाकारी आमे जोटा को फ्रेम नरेटर से निजर दामिका नायिका जोता रिपेयर पाई सठिक दुकान संधान रे बाहरची और निज वासस्थान अनति दूर में मोची काम करुवा राम दुलाल सहित प्रथमे भेटी तार व्यवसाय जनित साधारण वार्तालाप परे से राम दुलाल जीवन कहानी द्वारा धीरे धीरे प्रभावित होइची प्रारंभिक अध्याय रे ही पाठक जानिया को पाउची जे अनुराग दिल्ली को नुआ होई बदली आसी और दिल्ली रो प्रसिद्ध पुरातन नूतन स्थान सौध कबर और समाधि मानक द्वारा आकृष्ट होई सेमानक पछरे निवृत्त नामदेह शिल्पी एवं मजूरिया एवं तांकर पूर्वजक विषय भाबुची कारण मोगल बादशाह और यूरोपीय सम्राट बा भाइसरय मानक कथाटा इतिहास लिपिबद्ध करिछि सत किंतु साधारण लोकंक इतिहास के जानिछि अनुराग पचारुची एसबु अनेक अनेक कथा को आमे किपरि जानि न हमकु जानिया पई भारत वर्षर क्यों को अभिलेखागार रे एई तथ्य मिलिबो तेनु से सहरर गली कंदी बुली साधारण लोकंक संगे कथा भाषा होई दिल्ली रो जीवन पछरे समानक अवदान रो तथ्य संग्रह करछि किंतु से वर्णना जरिया रे वर्णनाकारी जे हमकु दिल्ली रो पेट तळर अंधकार बा डार्क अंडरबेली देखाउचंती एकता कहिबा केवल आंशिक भाव रे ठीक हबो कारण ए अजणा अंधकार हेला रास्ता घाट रे काम करूतिबा विभिन्न छोट व्यवसायी श्रमिक और सेक्स वर्कर संघर्षपूर्ण निजी जीवन यात्रा समय असमय रे काम सारी सेमाने निज निज घर को फेरीगला परे तांकर निज जीवन किपरि जियंती केउ विषय रे कथा हुअंती केउ भाषा रे कथा हुअंती तांकर परस्पर सह किपरि संपर्क गपटी से सब अंतरंग अंधार चिरी पाठक को स्पष्ट भाव में देखाउची अनुराग जरिया रे पाठक दिल्ली रो प्रकृत शिरा और धमनी को स्पर्श करि पारछ पाठक को लागुची घटना गुडिक से जेमिति निजे अंक निभाउची बा तार आखि आगरे गोटे परे गोटे घटी जाउची हां उत्तर प्रदेश रो रायबरेली पाख गाँ रु जीवन रो विभिन्न मोड़ रे धक्का खाई राम दुलाल शेष दिल्ली पहुंची निजर जीवन किपरि बिताउची से सबुर अंतरंग कहानी सुनाउची अनुराग को से कहानी आरंभ हुए तार सबुठारु पुराना स्मृति रु मने थिबा पिला बेलर अभिज्ञता और घटनावली रु जेबेठारु से देखी बुझिबा सक्षम होइची प्रधान गल्पर अंका धारा जदियो रामदुलाल रो सेतिर अनेक उपकहानी मध्य रहिची छोट बड़ चरित्र मानक जीवन सहित अनुराग रो परिचय हुए और सेमानक निजर गोटे गोटे छोट कहानी रहिची जहा रामदुलाल रो जीवन को छुईची अथवा समांतराल भाबरे किछि बाट जाई उभेई जाईची जेमिति पॉकेटमार करीम खान और अब्बाजान जहाँ संपर्क से आसी अपर पक्षर आमे देखू स्त्रीलोकटीए जे खुचरा देह व्यवसाय करी पेट पोषुची राति अधरे अंधारिया झाड़ी भितर को दुईटी पुरुष सहित से जाइछि एवं सेमानक सहित निर्लज भावे यौन संभोग जनित कथबार्ता और परे गाली गुलज करुछि एहा मात्र गोटे क्षणिकर दृश्य बा दृश्य प्रतिमा जहार रामदुलाल सह कोनोसी संपर्क नै तार निज कहानी रे अनेक परि मर्मन्तुत घटनावली वर्णित होइछि जहा द्वारा जे कोनोसी पाठक जेते कठिन हृदयर व्यक्ति होना कहीं दुख रे अभिभूत होई जिवो एथिरे संदेह नै ता संगे संगे विभिन्न घटनाक्रम रे एमिति हृदय स्पर्शी मन छुआ अनेक अंतरंग कथा काव्यिक मुहूर्त सामना को आसे तथा काव्यिक मुहूर्त सामना को आसे
जहाँ पाठकर मन को मोहिने विशेष भाव स्मरणीय छबिली और युवक राम दुलाल रो प्रेम मुहूर्त मान एसबू पाठकीय अनुभूति संभव होवार प्रधान कारण अनुराग जे कि एक संवेदनशील चित्र चरित्र एवं जहाँ जरिया गल्पर अवतारणा होउची निज नामर यथार्थता प्रतिपादन कला भली सीए रामदुलाल रो प्रत्येक दुख और खुशीर मुहूर्त मान को निज हृदय अनुभव करुछि। रामदुलाल रो बापा और दादा हाड़ी जातिर थिले और दारिद्र्यर चरम सीमार निष्पेषित होइतिले मध्य निजर आत्मसम्मान बजाय रखिले किंतु शेषरे सत चेष्टा सत्वे गाँ लोकंक अप्रत्याशित और उन्मत्त क्रोधर शिकार हेले तार बापा और तांकर सर्वस्व गोटे बलद 65 वर्षर वृद्ध रामदुलाल एवं अश्रुल चक्षुरे मने पकाउछि से अर्ध शताब्दी तलर दिन एवं कहूछि माँ पाई आ मो पाई केही भी कम नथिले ना बलद ना बापा एथिरे हमकु लागे केमती पशु समाज पाई मध्य सुनानीक गल्प सही भावरे अनुभूति देखौचंती जेबेली से मनीष मानक संप्रदाय विषय कहउचंती तेणु निज बापा संगे बलद को समान कर देइछि एवं कहउछि माँ पाई आ मो पाई केही भी कम नथिले ना बलद ना बापा दुख सही न पारी तार माँ मध्य अल्प दिन मध्य मृत्युवरण कले सब किछि हराई माँ बापा छंद नाबालक रामदुलाल प्रथमे मामू माई घरे रहिला तापरे निज गोड़े ठिया हेबा पई चेष्टा करिछि और मनुष्य समाजर व्यभिचार अमानुषिकता नृशंसता बेसी और अल्प किछि स्नेह सहानुभूतिर अभिज्ञता जुटाई युवावस्था दिल्ली पळाई आसी बाह्य वर्णनाकारी अनुराग साहाय्य दिल्लीर चरित्र चित्रण करने चेष्टा करिसेंती सुनानी और परोक्ष छोट गाँ और प्रकांड महानगर दिल्ली मध्य तुलना और विरोधाभास किसी चित्र देइछंती वर्णनाकारी अनेक समय दिल्ली उपरे कटु मंतव्य देइछंती सत किंतु गल्पर अनेक मोड़े रामदुलाल दिल्लीर विभिन्न चरित्र मानक ठारू स्नेह सहानुभूति पाइछि जदियो अनेक चरित्र यौन शोषण करने कथा मध्य वर्णित होइछि रामदुलाल निज मामू घरे कामातुर माईर चरित्र उपरे आंगुली निर्देश करने संगे संगे तांको प्रति माने तांको माई प्रति मामू और तांको माँ किपरि तांको दुर्व्यवहार करिसंती कारण से पुत्र संतान रो जननी होई पारि नाहंती और तीनोटी झियर माँ हेतुवा हेतु सहजरे सहर रे निज देह बिक्री करी पेट पोषिबा अन्य एक महिला उपरे मध्य सेमिति किछि नैतिक मूल्यांकन करिवारु क्षांत रहिसंती अनुराग एवं गाल्पिक निजे एभली अनेक चरित्र को विभिन्न दिगरु चित्रण करी वर्णनाकारी यह इंगित करछंती जे भूल करे से मनीष बा भूल करबा ही मनीष बनिया यार श्रेष्ठ मुहूर्त आसे जेतेबेले रामदुलाल छबिली प्रति आकृष्ट हुए एवं ताको विवाह करे किंतु छबिली हृदय मने पड़े जे सी तार अतीत कथा कहब नहीं से केवल कांदे कहब कि नहीं एवं से केवल कांदे सी ता अतीत कथा कहि पारे नाही काहेकि ताकू आउ जणे किए यौन शोषण करछि एवं तांकर एक भ्रूण हत्या मध्य होईछि से किछि तांकू कहि पारु नाही काहेकि कहले हुए तो तार जीवन रो शेष पूर्णच्छेद सेठी पड़ी जिवो सी आउ आगे पारिबनी तेणु एई जो गोटे ता मन रे द्वंद्व होईछि से मध्य एक असंभव भावरे गोटे मानविक मुहूर्त से केवल कांदे रामदुलाल निजे न जानिथिले मध्य सेही समय पाठक हृदयंगम करे छबिली रो नैतिक दुविधा पाठक से सब भूली जाई से दुईंक विरल मुहूर्तर जयगान करे उपन्यासटीर विशेषत्व अनेक किंतु मु से भितर दुईटी कथा संक्षिप्त रे आलोचना करी मोर वक्तव्य शेष करिबी प्रथम कथा हला तथाकथित दल उच्च नीच जाति बा समाज श्रेणी हेउ पृथक आर्थिक बा नैतिक दृष्टिकोण हो पाठुआ किंबा अपाठुआ हो प्रत्येक क्षेत्र में औपन्यासिक दृष्टिकोण निरपेक्षता बा भार संतुलन बजाय रखिया पई औपन्यासिक यथासंभव चेष्टा करछंती किंतु ता मध्य सूक्ष्म प्रच्छन्नता सहित डेलिकेट इनडायरेक्टनेस एपरी परोक्ष दृष्टिकोण संभव हो पारिछि कारण वर्णनाकारी दृष्टिकोण ना बाह्य वर्णनाकारी ना अनुरागर ना सुनानीकर जदियो बेले बेले लागे जे अनुराग है सुनानीकर अल्टर इगो बा आत्मस्वरूप उदाहरण जो विरोधाभास केमिति रही
गोटे उदाहरण है केतेबेले ग्राम्य परिवेशर किए प्रशंसा करुची निज गाँ को किए झुरी होउची नॉस्टैल्जिया गाँ पई उपन्यासर अनेक स्थान रे वर्णनाकारी कहउचंती दिल्ली रे केही काहा कथा सुनंती नाही बा सुनिबा को काहारी समय नाही पुनी अन्य कोठी कहउची दिल्ली गोटे एमिति जागा से सब प्रकार लोकन को कळई नैछि गाँ विषय राम दुलाल पुनी कहउची मु जोंटी जन्म हेतिली सेही भल पाइबा एवं संपर्कटीए मिल पारलानी बोली तो आज एठी बसिछि अन्यत्र दिल्ली विषय राम दुलाल रो मंतव्य सुनतु एठी देखंतु ना मते केही जाति पचारुछंती ना मते केही घृणा करूछंती मोर मोची व्यवसाय को नहीं केही नाकटे को नांती धर्म विषय अनुरूप विरोधाभास रहिछि अनुराग सत चेष्टा कले मध्य राम दुलाल रो भगवान विश्वास रे भगवत विश्वास रे जानी पर नाही बेले बेले लागे राम दुलाल उद्देश्य रे अनुराग रो नीति शिक्षा पाठक को धैर्यच्युति घटाई पारे से पचारि पारे राम दुलाल तो निज भगवत विश्वास नहीं खुशी रही अनुराग कहीं ता भीतर विद्रोही मनोभाव सृष्टि करिया पय चेष्टा करछि ता छड़ा अनुराग रो शिक्षा पूंजीवाद और विज्ञान उपरे अगाध विश्वास गोटे गोटे अंधविश्वास ठारू कम नुहे ताकू केबा कहबो जे बहु उच्च शिक्षित लोके वर्ण विभेद जनित फासीवाद रो पृष्ठपोषक थिले एबे मध्य उच्च शिक्षित हिंदू बुद्ध मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म नाम रे रक्तपात करिया को पछौ नांती अवश्य उपन्यास शेष होला बेलको ए प्रकार कथा तार धीरे धीरे हृदयंगम होतला परी मने होची उपन्यास रो द्वितीय विशेषत्व हैला महानगर रो अरक्षित बा गरीब श्रेणी रो पिला बा पुरुष और स्त्री लोकर वर्णना लंडन को नहीं डिकेन्स को उपन्यास गुडिकर केते घटना और चरित्र तुलना रे किछि कम है जेमिति करीम और अब्बाजान रो चरित्र मने पकई दिए डिकेन्स को ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास रे पॉकेटमार जैक also known as artful dodger और प्रौढ़ धर्मपिता अपराधी फागिन कथा शेष रे उपन्यास रे सुनानी का भाषा प्रयोग युवपीढ़ी लेखकों को नुआ बाट देखाइछि बोली कहबी चरित्र और घटना सब जमिति वास्तववादी भाषा मध्य अनुरूप साधारण देखा जाए ओडिया गल्प व उपन्यास भाषा एवं वार्तालाप भद्र लोकों भाषा पढ़िले लगे ओडिया चरित्र मानक भली भद्रलोक और भद्र महिला पृथ्वी रे नाहंती सेमानक मुहरु केबे अभद्र भाषा बाहर नहीं किंबा तांको जेपरी जोनांग ही नहीं इंग्राजी रे जहाकू जेंटिल परंपरा बा भद्रलोकी संस्कृति कहा जाए दलित लेखक माने एई भद्रलोकी परंपरा रे विश्वास करते नहीं नामदेव धासालଙ୍କ परी अनेक लेखकଙ୍କ कविता रो भाषा देखंतु एपरी कि अनदलित कवि अरुण कलाकारଙ୍କ मराठी कविता देखंतु कंचा भाषा कहिबारे सेमाने पछांती नहीं उपन्यासटी जो समाजर लोकंको कथा वर्णना करूची सेठाकर चरित्र माने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर रो मेंबर नहती हेतिले मध्य निज शयन कक्षर अंधकार रे समाने प्रेमालाप कला बेले अवश्य भद्र भाषा रे कथा कहू नथिबे 19 शताब्दी रे उपेंद्र भंज को नहीं जो शील अश्लील कंदल होइतिला तार फल आमे एबे भी भोगुचु सुनानी का भाषा सेथिरे अभिनंदनीय व्यतिक्रम मसानी सहर दिल्ली रो देह बिकुतिबा स्त्री चरित्र बा रायबरेली गाँव चरित्र बा पॉकेटमार जेमिति भाषा कहब सुनानी सेपरी वास्तव धर्मी वार्तालाप सेमानक मुहरे देइछंती भद्र पाठक पाठिका हुए तो लाज भय मर्माहत हो पारती आशा उपन्यासटी आदृत हब धन्यवाद नमस्कार Thank you so much, sir, for your insightful remarks on the novel. May I now request Professor Rajkumar to begin with his presentation. Professor Rajkumar is currently head and professor at the Department of English, University of Delhi. He's a well-known scholar and teacher of literature. He is the author of several books, which include Indian autobiographies, Dalit literature and criticism, and he's also the translator of the what is considered the first Odia Dalit novel written by Akhila Nayak. The novel is titled Veda. He is the translator, and he has also been a visiting faculty to several universities and has published and lectured widely. Without further ado, I request Rajkumar sir to please begin with his remarks on the novel. Thank you, sir. Yeah.
Thank you, Saswat. Good evening to everyone. Respected my co-panelist, Professor Sumanyu Satpathy, Bhima Prusti, of course, Dr. Vasudev Sunani, and Manoa Das. I first congratulate Saswat and his team to have organized this event, which is they're going on very nicely. I'm really proud of being a part of this panel. Professor Satpathy, of course, that has already that spoken in Odia. I will try to combine both Odia and English. Sorry, that I was told that there are also non-Odia audience, so that I'll try to be as simple as possible. But I'll in between, of course, speak in Odia. I just begin with the whole idea of that congratulating to Dr. Vasudev Sunani because of his path-breaking novel Mausani Sahara Delhi. This is his second novel, as we have been announced, and of course people know about. And that by writing this novel, he has become a part of the galaxy of writers, as Professor Sumanyu has already indicated. That the first novel by Ahmad Ali was considered to be a novel written on Delhi, Twilight in Delhi, and there are that 10 or 12 novels. It will take time to announce, but then I'll just try to say that by writing this novel, Vasudev Sunani has become part of the galaxy of writers who have written on Delhi, like Khushwant Singh's Delhi, a novel, and of course William Dalrymple, City of Genes. The Walls of Delhi by Udaya Prakash, actually, that Udaya Prakash is the one who comes closer to Vasudev Sunani because two of his characters, Mohandas, who is a lower caste man, and Ramnivas, a sweeper, they become part of Udaya Prakash's description on Delhi, the Walls of Delhi. So, and then the last, of course, that I read a novel. It is more of actually, that autobiography. It is actually travel kind of writing, but then Elizabeth Chatterjee gives the title Delhi Mostly Harmless. So these are fascinating, that list of books, mostly novel, which write about, many which talk about Delhi. But that what is interesting about Vasudev Sunani's Mausani Sahara Delhi, I tried to translate this as the city of dead, both real as well as metaphorical. That the fictional account is all about Dalits and subaltern, though of course there are characters who happen to be capitalists, bureaucrats, politicians, and that many members of civil society. So what is very interesting about Vasudev's account of Delhi, as he has already pointed out from the very beginning, and I would like to draw your attention to that few of the things. So I'll just make 3 or 4 basic points about this book. One is that the central that focus of his narrative is all about the subaltern and the Dalits. That is what that my perhaps there are many subjects, of course, we can touch about, but then mostly my focus will be on how does Sunani try to take us to the universe of Dalit and subaltern. That these are two perhaps that constituencies whereby I try to talk extensively. Now, Dalit and subaltern have come to Delhi to make their homes, but as Sunani has already announced that that given this statement that nobody belongs to Delhi or Delhi doesn't belong to anyone. Delhi is like also London, that as we all know. Whether the subaltern who have come all the way from their homeland as migrant laborers, mostly, that I'll take few names later maybe,
Whether they have been successful in their attempts or in their venture to make Delhi their home, perhaps it is difficult to say yes. Now, that we all know that the end of the novel is really tragic because Sunani talks about more than 60 million migrant workers after the first lockdown, and perhaps that this is national lockdown, of course, due to COVID pandemic, and we are hoping that the second lockdown may begin soon. That so that the migrant workers for the second time, that they have started migrating to their homeland. So the end of the novel actually, that clearly suggests that perhaps they don't belong to Delhi; they belong to elsewhere, because that even if Anurag, the narrator, is trying to contact Ramdulal, the main character, that the phone doesn't get connected. So that perhaps is a chaotic scene whereby the novelist is asking about, through these maybe the characters, I'm talking about Dalit and Subaltana, about that how India as a nation state is doing during a crisis. Uh, as we all know, that, and it is known to everyone, that whenever there is any crisis in India, or maybe that elsewhere, but I'll try to focus my talk on India as a nation state, whether famine, whether it is flood, whether it is recent lockdown, and we have seen, that how migrant laborers, they have traveled far and wide, that sometime walking bare feet, 1700 kilometers, several of them dying on the way. Now, actually, that even though the novel talks about many different things, beginning and an end, that Vasudev tries to relate it to, that the whole idea of how these subaltern Dalits, they try to, suffer miserably. And whenever, suppose, there is a crisis, of course, we know about the role of the state, the government, and also the civil society, because they always blame the subaltern for their miseries and their suffering. I will draw your attention to Vasudev's own poem, that Professor Satpathy would have been happy, because, that we have a poem by Vasudev Sunani, which got published little before the publication of this novel. I just read maybe, that few lines of this poem, where he terms Delhi as a helpless city. ଦିନେ ଏମାନେ ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମ, ପୁଅ ଝିଅର ସ୍ନେହ, ଭିଟାମାଟିର ମମତା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନର ତାଗିଦା ସବୁକୁ ପାଦରେ ମକଛି, ଭୋକର ବୋଝକୁ ବୋହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଶ୍ରମ ଓ ସାର୍ଥକ୍ୟ, ତ ଖିଲିଖିଲେଇ ଉଠିଥିଲା ସହର। ମହକି ଉଠିଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର, ନାଲି ଗଳି, ଛକ, ମଲ୍, ଅଫିସ, ପାର୍କ, ଷ୍ଟେସନ, ବଜାର। But that I'll just try to indicate that that is the end of it, because once ଘର ଦ୍ୱାର, ନାଲି ମଳି, ଗଳି, ଛକ, mall, office, park, station, bazaar, that all these start functioning well, then that nobody bothers about who made this mall, who made this that metro, maybe who made the roads and railways. We all forget actually. Now, in this situation, Vasudev really brings several questions from the very beginning. In fact, if you go to page number 10, the beginning of his maybe that novel, and I'll just that start reading, that he asks several questions. ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂଲିଆର କେହି ଜଣେ ବଂଶଧର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହୁଛନ୍ତି? So these are the questions. that ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଗୃହ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେ ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲା, ସେ କେବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା କି? ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ପଥର ଆସିଥିଲା? So I'll just stop reading this, that there are more than a page of questions.
The questions are innumerable. The whole idea here is that who are the makers of Delhi? That is the question the novelist asks. Whether they are the kings and queens of yours, both ancient and medieval, or the colonial administrators during British time, or the politicians and bureaucrats of post-independent India, including the present dispensation. As we know, the city of dead is as much about Delhi as it is about the nameless and faceless living characters. So some of the characters, as we all know, Ramdulal, Rajinder, Chandulal, Vishwamitra, Chabeli, Sunita, and many others. And they are the ones who write the fate of the nation state. It is not just that they are making Delhi, they are also writing the fate of what I say, the nation state, India as a nation state. So I will go to the extent by saying that they are the one who are the makers of India. But how? That is the question, because the novelist asks several questions in between. Now, thanks for Vasudev that through this living character, I try to emphasize these living characters because they are real. Vasudev, through his narrator Anurag, suggests that every Saturday and Sunday during his, the Basu's 2 years staying in Delhi, every Saturday and Sunday he would meet people, try to listen to them, and then, that he would document their stories. So that's why I use the word living characters. So these living characters who are otherwise treated by Indian caste society as non-humans because they don't exist for Indian state, through this writer, Vasudev Sunani, he has made them not non-humans. I try to emphasize, though in a fictional narrative. Now, I try to bring a little theoretical framework here, that just to read this novel in a larger context, not just in Indian and Odia context, but also, that that novel in general. I quote here Michael Mascius. He's a Cambridge historian, and in his book called The Origins of Individualist Self, says, and he writes actually, that I quote him, narrative is the medium of human agency. The concept of a routine research to a narrativized script enables and constrains the personal agency of the individualist self. So what Vasudev throughout his narrative is doing, he's not only giving agency to these characters, because first and foremost, that when it comes to Dalit writing, we always try to see non-Dalit writings as well. Say, that the famous Mulk Raj Anand's Untouchable, which is about Baka. Where is the agency Baka, that is having? There is no agency. So the first and foremost thing that we come to realize that Vasudev is giving a proper agency to these characters, even though they are individual, Ramdulal, maybe Chabeli, or maybe Rajinder. What we at a larger level, that what we find, these are individuals, of course, but through them, we also come to realize about their history, their culture, their community, their economy, their religion, and whatnot. That there are several things that we come to realize about. So I'll just maybe pinpoint here about, say, the idea of history. Maybe that it will take time because we don't have enough time. I could have elaborated about maybe that whether it is culture, economy, religion, but let me restrict to maybe that 1 or 2 points. So let me first talk about the idea of history. The novel narrates historical events beginning from the Mahabharata time. That thanks for Vasudev, that it is packed with ancient to medieval to modern till the pandemic time, till 2000. That so from ancient time to 2000, it is packed with, and that's why perhaps that we have such a bulky novel, 384 to be precise pages.
So Vasudev, that tries to perhaps that take into account the idea of Delhi, that from a village maybe Indraprastha to that how it has become a town and then cosmopolitan city. Now it is a metropolitan city. So the evolution of Delhi, it is too much actually, that for a novel to write about, and yet Vasudev tries to do that. So from Mahabharata time to medieval Mughals to modern British and independent India to COVID pandemic. So it is definitely historically it is a vast time span, and that what is most important about the historical side, as that I pointed out this, whether it is Mahabharata, the reference to Indraprastha, or whether it is medieval, that India, medieval Delhi, maybe that Chandni Chowk he refers to, and that Jahanara and all this. These historical sites give us a kind of that what is most important about Vasudev's writing is that it is through that his narrative that we come to know about, or Vasudev that at least make us to ever about, or he draws our attention to how Dalit and subaltern have participated in the making of these history. That never before, I don't think that anyone has written about how Dalit have participated in making of, say, that Delhi Gate, or maybe that Parliament building, or maybe Lal Killa, or maybe you talk about anything. This is a quite important, actually, significant act. These representation are always glossed over by the professional historian. That how much you talk about history, including the subaltern historian. We all know, that Ranjit Guha and his company, even though they talk about people's history, where are the people? It is only through a novel like Mosani Sahara Dilli that we come to know about the participation of ordinary and common people, particularly Dalit and Subaltern, in the making of Delhi. So that I could have given many more examples from the novel, but I will not do that. But overall, that I have to say that in that sense, that by making Dalit and Subaltern as a very active participant in the historical process or making of history, so far as Delhi is concerned, Vasudev is not just writing about the city of Delhi. He is also rewriting the history of India in a major way. These are some of the statements that I am making. Now, that if at all it is actually, that rewriting history, hope, that Vasudev, what he is doing also, that other Dalit writers have just started writing, because Kalyan Rao in Untouchable Spring, he is a Telugu Dalit writer. In his first line asks, that where is my history? Being a Dalit, he asks question, where is my history? Where is my forefathers' history? So, that, and he writes about 8 generations of his, people who really make history. This is Untouchable Spring by Kalyan Rao. We have, that Mohandas Nemisra, who has a book on 1857, how Dalit have participated in the, that the first war of independence, what is called Koimutni. So Dalit writers have just started rewriting history because history was silent about them. So this is perhaps, that biggest contribution by Vasudev. Now, that having said this, as a student of literature, I want to ask question actually. So what is the relationship between art and history? Because Vasudev's Mosani Sahara Dilli is not a history, of course, book, not a historical book. It is a novel.
Can art be read as history? That is the question that we are asking. In this context, Ashish Nandi, I like to draw your attention to, in another context, of course, arts, is art disavowed double of disciplinary history? I believe Vasudev Masani Sahara Delhi can be considered as fictional archaeology, as the historical events are packed off. So I will go to the extent by saying that this is a fictional archaeology where you will find, everything beginning from Mahabharata time to pandemic, and in between everything maybe, It just take maybe, the few minutes, the language, we have already, that Professor Sumanyu has already talked about that, how the language is gentle, unlike maybe, that other Dalit writers who can abuse God, that there are Dalit poets who use sometimes, that abusive word, half shameless, these are some of the rendering by the Dalit poet. Vasudev's, that language is very plain, simple. It is the everyday language of the ordinary and common people. By saying this, that I'm also trying to, that talk about how throughout Odia history, maybe, that is so far as Odia literature is concerned, and of course we have two poets and, that writers. We come to know, that Odia literature, even though, that it started with the whole idea of Sudramuni, Sarala Das, maybe, that in between, that too many writers and poets, but mostly Sanskritized Odia. It is now, that Dalit writers are coming into the purview of maybe, that Odia literature, that the language is getting changed. Now, that, so the simple idiom and expressions are coming into the purview of Odia literature, which was earlier not available. There are colloquial words from Western Odisha where Vasudev and me, we come from, like Kuten. I don't know, that whether non-Western Odia will understand this term. Kuten, Bon, Danchingu, etc., etc. I mean, there are other things also, but then, that I'll be refrain from. The novel is also people with many English words. Perhaps, that Vasudev, without maybe bothering anything about he uses. I don't know whether this is also a trend in Odia literature, because, that he uses words like gym, plumber. I don't know whether there is any word in Odia, that which could be used, in place of plumber, darling, scientific, socialism, etc. So, that some of these words, they go, that perhaps without any, that maybe, Vasudev may not be thinking about, maybe, that is the kind of use that maybe Odia writers are doing. The third, of course, that is the narrator, Anurag, as we have already, discussed about, is the third person. So the third person narrative, actually, that I think it has both strength and weakness so far as this novel is concerned. Yeah, the strength perhaps is that Anurag can peep into anything and everything and comment from a distance. That is, that perhaps the advantage of being third person narrative. But the weakness, of course, is the narrator is not involved in a way, as we all know that, that the author is so much involved. And that's where stories are, that sometimes narrated in such a way that there is as if a distance, that being maintained between the character and the event. So this is perhaps a kind of weakness so far as, that the third person narrative is concerned. Had it been first person, perhaps, that like the poem that I read of Vasudev Sunani, that very direct, concise, and maybe, that the author narrator is, that having omnipresent, maybe, that. In spite of this,
Masani Sahara Dilli is a modest attempt to remind us, the readers, that India as a society has failed in every sphere. That is what that we come to know. As I was telling you, that the title Masani Sahara could be both real and metaphorical. Yeah, so it had failed. It is a fallen state, India as a nation, because that how much slogan we have raised about poverty for last how many years? 70 years we have been raising this question. Garibi hatao, but poverty is maybe that you can see that the rich are getting richer. Particularly, that if you have heard about that during pandemic, while Mukesh Ambani's that per minute income was 38,000 per minute. That that how many people have left their jobs, which was of course that not a permanent job. That 60 million people we are talking about, those who work in or unorganized sector. So that the rich are getting richer, beginning from maybe that Indian economy has been liberalized, and the poor becoming poorer. In fact, they're dying. That. So, be it poverty, for example, education. Look at the state of education. Perhaps it is not a place to talk about. That I would not, that begin to discuss about the state of education. That how we as a state has we have failed to maybe that properly not only that motivate students and teachers. That even though we are claiming that ours is that a kind of a republic that stand for that justice, equality, and fraternity, we have failed in many accounts, and whether it is poverty, education, malnutrition, just talk about, and there is rampant corruption in every sphere of life. So, as a conscious citizen of this country, what is due from us is to uphold our intellectual and ethical commitment. That is what Basudev Sunani is, that by writing and publishing this novel, and now that we are discussing in public sphere, is hinting at that what is the role as a reader, maybe, that the intellectual and ethical commitment that we have. I will quote from Cosmico Zen. Recently, I finished reading his book called The Political Philosophy of Antonio Gramsci and B.R. Ambedkar, where he writes, the conviction that until those at the margins of history, they are cross people, these, the Ramdulal, Rajinder, Chabeli, these are the cross people because they are being crossed by whether it is Indian caste society or even economy, or maybe, that due to several other reasons. So until those at the margins of history, the cross people become full part of the history and political engagement of their country and of humanity. So it is not just country, but humanity as a whole. Our democracies will be incomplete and will need to find new ways to welcome the excluded. So welcome to the City of Dead. Thank you for your patient listening. Thanks all. Thank you so much, sir, for your perspicacious set of observations. Thank you for some very important remarks that you made. I mean, you translated it and rightly so, as Delhi, the city of dead, is supposed to be a city which is pulsating with life. There are so many people, but at the same time, we are compelled to ask this question: what are these lives which matter, and what are the ones which do not? So that's a very serious question that this novel poses before us, and thank you also for reminding us what stories are capable of doing, the power of story, the power of storytelling, that it talks about all those people who have played very important roles in history, and unfortunately they have been forgotten completely. It seems they have been wiped off from history. So and also for giving us those quick glimpses of the text, and for those viewers who are wondering
What more does this text have to offer? I must tell you, let me tell you that we also have Sri Manua Das, who will be reading excerpts from the book. But before that, I would like to request Sri Bhima Prusti to make his observations. Sri Prusti is a renowned writer of short stories, has a collection of at least 8 short stories to his credit, some of which include Ho Monisa, Peto, Petotala, Ode Monisa, Gopara Hadagodo. He is also the author of 7 novels, Muhana, Kavitar Upannyas, Priyonari, Samudra Monisa, etc. He has won several awards, including the Odia Sahitya Academy Award in 2008. So, may I now request Sri Bhima Prusti to ଯେ ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀଙ୍କର ମଶାଣୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଭେଲଟି ମୁଁ ପଢିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଏପରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ହେଇନି ବା କମ୍ ଲେଖା ହଉଛି। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ୱାର୍ଲଡ ସାରା, କାରଣ ଆମର ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ଓ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇମାଜିନାରୀ ଷ୍ଟୋରିର ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ। ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେ ସିଟି ଅଫ ଜୟ ଯେମିତି ଡେଭିନିୟର ଲାପିୟର ଲେଖିଲେ, କଲିକତାର ସେଇ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସାବାଲା ହସାରୀ ପାଲଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡିର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ସିଟି ଅଫ ଜେଡ୍ ଡେଭିଡ ଗ୍ରାମ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଯେମିତି ପ୍ୟାରିସ ଜାୱାଲ ଲେଖିଲେ ପେନୋଲି ଲୋରାଣ୍ଟ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର 30 ଜଣ ଲେଖକ ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲିକିରି ଏଇ ପ୍ୟାରିସ ଲେଖକକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦେଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ ପ୍ୟାରିସ ଜାୱାଲ। ଦି ବେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ରିଭର ଲେଖିଲେ ଭିଏସ୍ ନାଉପାଲ, ଯିଏକି ମିସିସିପି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଜିମ କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନେଇକିରି ସେ ଏଇ ନଭେଲଟି ଲେଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ କାଲକାଟା ଚାସ୍ପିୟର୍ସ ଲେଖିଲେ, କଲିକତା ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଚିତ୍ର, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ୱାଲଟିୟର ଦର୍ଶନ ହଉ, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ହଉ, ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାଜି ରାଉତ ହଉ, ଗୋପୀ ମହାନ୍ତି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ, ଯୋଉଟା କି କନ୍ଧ, ଗଦବା, ସୌରା ଆଦିବାସୀ କଥା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପରଜା, ଦାଦି ବୁଢା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶନ, କଳ୍ପନା, ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ ଆକୁ ନେଇକିରି ଗୁଡାଏ ନଭେଲ ଲେଖା ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସମାଜର କଥାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଘାତ ଭାବରେ ନେଲେ, ସେଇମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ସୁନାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଶାଣୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଏ ଗୋଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ। ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀ ସେଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରିଠୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିକି ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିବା କଥା, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସହର ଏଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ।
कारण पाठक सदाबेले नुआ किछि चाहिबो कारण पाठक सबुबेले लेखक कौन लेखुछि ताको पिछा करिवो द रीडर वांट्स टू ट्रैवल बिसाइड यू तेणु पाठक सदाबेले नुआ चाहिबो नुआ कथा सुनिया को चाहिबो नुआ घटना जानिया को चाहिबो तापरे से लेखारे लेखाटा गोटे नुआ लेखा बोली ग्रहणीय होई परिबो तेणु पाठकर एई जो शोषक पाठकर एई जो आग्रह लेखक जदि कौन अनाविष्कृत जगत को जदि उद्घाटन करि परिबो ताले सेटा ही भलो नोवेल हेई पारि नुआ चरित्र नुआ स्थान नुआ कहानी आकु से जदि देई पारिबो तेणु वासुदेव सुनानी सेई कामटी करछंती मु वासुदेव सुनानी जो अनुराग चरित्र टी आछंती से निजे वासुदेव सुनानी एटा मते बुले बंकी कहले से जने वाक्यकार बा से जेमिति सूत्रधर दिल्ली ऊपर दिल्ली रो अन्हार जगत को नेकरी बा दिल्ली रो बस्ती अंचल को नेकी बा निम्न वर्ग लोक मान को नेकरी बा श्रमजीवी लोक मान को नेकरी मु गोटे उपन्यास लिखिबी ये प्रणाली भितर को से जाइचंती सेई प्रणाली भितर को से खोजिचंती जे सेई भली लोक वर्गर लोक मान वासुदेव सुनानी जो निजे होचंती अनुराग एवं अनुराग जो नोवेल्टी की दिल्ली ऊपर लिखिया चिंता करचंती एवं से चिंता करचंती जे मु सेई निम्न वर्गर सेई वर्गर लोक मान कथा लिखिबी एक कथा चिंता करचंती आंक भीतर गोटे प्लानिंग हेची मन भीतर एवं राम दुलाल सहित देखा हेची एवं राम दुलाल सहित बारंबार भेटिचंती एवं राम दुलाल कहानी सब आनिचंती एवं तांकर बापांकर जो अत्याचार गाँव रे जो अत्याचार हो बा छबेली सहित तार विवाह हो बा तांकर झियर There seems to be some technical issues. Hello. I would request our viewers to bear with us. Thank you. हेलो हाँ सर प्लीज कुहतु आम सुनी पारछु सर प्लीज कुहतु एवं रामदुलाल कहानी जोटी से शेष करचंती सेठी से जने ऐतिहासिक बा समाजर संस्कारक बा परिवर्तनक किपरि भाबरे हबो गोटे वर्गर लोक माने केमिति अछंती सेई कथा से कहचंती रामदुलाल कथा जोटी शेष हेची रामदुलाल कहानी जोटी शेष हेची से अन्य प्रसंग को चली जाइछन ताई इतिहास हो बा सेई वर्गर लोक मानकर अन्य कहानी हो एवं एई नोवेल रे सबुठु बड़ दिगटा होची जे तमे गोटे रीडर आकु निश्चित भाव में शेष कर आ भितर तथ्य सहित कहानी जो मिलन कराई निश्चित भाव में मु से दिग को जाऊ नहीं जे एई उपन्यास रे जे किपरि भाव में गोटे गोटे दर्शन को बा गोटे चिंता को केमती प्रकट कराई मु केवल विश्वास कर जे दिल्ली की गढ़ी सेई गाँ हरा लोक माने जो माने निर्यातित लोक माने श्रमजीवी लोक माने हेलो 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 हाँ सर आमे सुनी पारछु आपण प्लीज कोहंतु आमे सुनी पारछु एवं आउ दले अछंती मध्य निश्चिंत भाव में श्रमजीवी लोक माने एवं एई श्रमजीवी लोक माने सारा भारत वर्ष एपरिक नेपाल रु मध्य आसिक एठी दिल्ली रे विभिन्न कार्य करछि दिल्ली रे तबे पहुंचि से माने गाँ सब भूलिया पाई चेष्टा कर बारंबार जाउछि आया मु तो मो इमोशन भी जाउछि आ जाइछि मु खाली एठी बारंबार जाउछि मु तो निश्चित भाव दुईटी
सुमनु सारंकर आउ राजकुमार सारंकर निश्चित भाव में गोटे तात्विक पूर्ण कथा मु शुणिली मु तो जड़े लेखक मु गोटे बही उपर कौन गोटे तात्विक आलोचना करी तेणु मु किपरि फील्ड स्टडी करके नोवेल लेखे मु गर्वित जे निश्चित भाव में वासुदेव सुनानी सेमती गोटे फील्ड स्टडी नोवेल लेखि पारिछंती। अच्छा ये जो वास्तवता ये नोवेल कहीं वास्तव लगुच कहीं भल लगुच कहीं शेष करने इच्छा होची मु भेद अखिल नायक भेद उपन्यास पढ़ी एवं मु जानी से उपन्यास टी बहुत सुंदर उपन्यास गोटे भारतीय उपन्यास बोली कहि कहीं से उपन्यास टी एते सक्सेस हला ता कारण होची सही भलिया जीवन देकरी अखिल नायक जाइछंती एवं तांकर सान भाई कथा वेद उपन्यास से एते रियलिस्टिक है। वासुदेव सुनानी उपन्यास रियलिस्टिक है जे से उपन्यास जोरसोर परिश्रम कर चरित्र पिछा से गोड़े कहानी से कहानी पछर से गोड़े जिते कहानी कमी जाइए कहानी जिते आउ रामदुलाल आउ कौन कहानी नाई से कहानी संपर्क में मु बर्तमान आलोचना करना डॉक्टर सुमनु शतपथी कर सारी सी आमर जो सामाजिक व्यवधान सामाजिक प्रतिघात धार्मिक जीवन यात्रा ऐतिहासिक माने ऐतिहासिक वास्तवता तार डाटा युड़िक एवं ताकू आनिकी कंटेम्परारी बहुत कंटेम्परारी करोना समय परिस्थिति को आनिकी उपन्यास शेष में पहुंची कहते समस्ते एकदा कही दिल्ली मोर हेले दिल्ली सहर आज जाए कार भी निजर रही ना एक से कौ परिप्रेक्षी कहते जो परिप्रेक्षी कहते जिते से कहते रामदुलाल छबिली कहानी राजिंदर राजा सिंह करीम कथा आबाजन चरित्र प्रोफेसर दीप बही दोकानी विश्वामित्र सुरेश कुमार चांगू बेंगू सुनीता विनय चंदुलाल पांडोजी एमती केते केते चरित्र मन से ताकरी कथा कहते एवं एमानकर जो कथा ये जो शहर टी से जो तैयारी करचंती शहर को जो बरकरार रखी जीवंता कर रखी आगुरु जो अनंगपाल शेरशाह शाहजहां ब्रिटिश मोगल समय जो माने नहांती वर्तमान जो माने वर्तमान अच्छा से कोरोना रे गाँ मुआ तेणु दिल्ली तमें निजक जिते योग्य कर न पारिले दिल्ली आमे तुमको दूरे दब यहाँ प्रोफेसर दीप कहते जी को कलाहांडी गणा संप्रदायर जड़े व्यक्ति जे कि प्रोफेसर से कथा कहते तेणु ये दिल्ली संपर्क में ये गोटे निश्चित भाव में गोटे तथ्यपूर्ण नुआ दिग को देखा उपन्यास ये उपन्यास रे आमे निश्चित भाव में आउ टे परिश्रम दरकार थिला आमे तथ्य को थोईदेले डॉक्यूमेंट हो निश्चित भाव में कहानी की शेष पर्यंत नबार थिला रामदुलाल चरित्र रामदुलाल को चारि पाखर जो चरित्र कुहेलिका से तैयारी करचंती तारी भितर पछरे रहिथिबा जो दिल्ली रो इतिहास को व्याख्या करिवार थिला तापई स्वतंत्र कोनोसी अध्याय करिवार नथिला शेष आड़ को दिल्ली रो इतिहास को लेकिन निश्चित भाव में गोटे उपन्यास सबुठ बड़ कथा होची तार आत्मा होची कहानी कहानी भितर तथ्य रहिबो किंतु तथ्य द्वारा भाराक्रांत जमी कहानी न हो यहाँ देखा कथा क्रिटिक निश्चित भाव में आपको गोटे भल नोवेल कहे कारण बहुत ये नोवेल बहुत तथ्य दिखाई बहुत परिश्रम कराई किंतु मोर कहवा कथा हूँ जे दिल्ली रे जातिवाद द्वारा निष्कासित होता गाँव रु निष्कासित होता लोक मैंने हूँ बा दारिद्र्यर कषाघातर निपीड़ित लोक मैंने हूँ बा ठिकादार मान द्वारा आसिकी रही जाइथिबा लोक माने हुंतु जो माने 1922 मसिया ता आगुरु आसिकी दिल्ली शहर रे सारा भारत वर्ष लोक माने रही चंती जो श्रमजीवी लोक माने आज मुंड छेकी खिड़ा ही चंती से माने केमिति मसाणी शहर रो लोक हे से माने केमिति मसाणी शहर दिल्ली रो लोक हे तेणु ए उपन्यास रो ना काई कि मसाणी शहर दिल्ली हबो जोटी गोटे सुंदर जीवन जोटी से मानकर दुख को भूली जाउचंती जातियाना भाव सेठी नाही गोटे गोटे भाईचारा रही भितर बंची रही संघर्ष रही से माने हक भिक मागु ना काम करी खाऊं से माने बंची
ବଞ୍ଚିବାର ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ଥାଇପାରେ ସମାଧିର ଥିଲା, କେବେ ସମାଧି ଥିଲା, ହୁମାୟୁନ ଟମ୍ବଙ୍କର ସମାଧି ଥିଲା, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଟମ୍ବ ସମାଧି ଥିଲା, ସୁଲତାନ ଗୋରିଙ୍କ ଟମ୍ବ ଥିଲା, ସିକନ୍ଦର ଲୋଧିଙ୍କର ଟମ୍ବ ଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ହଉ ବା କୁତୁବ ମିନାର ହଉ ବା ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ହଉ ବା ତାଜମହଲ ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଧି ଥିଲା, ତା ତ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଛି। ସମାଧି ଏମିତି ତ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଧିର ଜାଗା। ଆପଣ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଗୋଟେ ସମାଧିର ଜାଗା ଥିଲା। ମୁଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀକୁ କହିବି ଯେ ଆର ନାନ୍ଦନିକ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ବା ସମାଲୋଚନାଗତ ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥା କଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଠକ ପାଇଁ ମଶାଣୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଏତେ ବାସ୍ତବ, ଆଉ ଆର ଭାଷା ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଏତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଏତେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅତୀତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ସେମାନେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ବା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହର ହଉ, ଯୋଉ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାରଣ ମଶାଣୀ ଉପରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ନା, ମଶାଣୀ ଉପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଦେଇକିରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଜେନେରେସନ ବାଇ ଜେନେରେସନ ସେମାନଙ୍କ ଜେନେରେସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ନଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଧି ଜାଗାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ ନାମକରଣ ମଶାଣୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଣୁ ଆର ଯୋଉ ଲଜିକ ଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୀବନ ରହିଛି, ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନେ ଫେରିଲେ ଗାଁକୁ, ସେମାନେ କଣ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଛ କରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଲହର ଆସିଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରି ପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକି ସେମାନେ ଫେରିବେ, କାରଣ ଗାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଳସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟାଲଜିକ ମୁହଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆରଥରକ କରୋନା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଦାବେଳେ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଇକିରି ଅଗ୍ରସର ହବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନୂଆ କଦମ, କାରଣ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ବହୁତ ନାହିଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକିରି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହବ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ଧାରୀ ଜନଜୀବନ ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଥା ଓଡିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀକୁ ମାନେ ସାବାସୀ ଦେବି, ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ এইভଳିଆ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ନଭେଲ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you for your comment, sir. You have reinforced, I guess, what is a belief shared by many, that a writer with his magical powers can convert his field notes into a moving story, such as the one which we are discussing today, Mashani Sahara, Delhi. We now come to that very important segment of today's event of this book discussion, which is reading of excerpts from the book, and that will be done by Sri Manua Das. Doesn't need to do much to introduce Sri Das, who's a well-known figure in the media and television and film fraternity in Odisha and outside. He's also a poet, has at least 2 books to his credit, Kahari Akhire Nidonahi and Mahu Phena. He has written scripts for several TV shows, for TV series, for films. He has also contributed to documentaries that are known not only in Odisha but outside Odisha, and he's somebody who
who has straddled careers across fields and disciplines. I mean, as somebody who had excelled as a young physicist and then who chose to study sociology, but who gave up all that for his enduring love for poetry. And over the years, he has written scripts for several, like I said, series and films, and has collaborated with governments and even with the United Nations. So we are honored to have Sri Das in our midst. May I now request him to read excerpts from the novel Mosani Sahara Dilli. Welcome, sir. Thank you, Shashwat. आमे सीधा सड़क बही भीतर को जीवा आरंभ जेमिति दिल्ली को देखिबा ओ बुझिबा एते सहज नुहे अनेक थर दिल्ली जाइछि हेले देखि पारि नथिले सेठी को जाई केंद्र सरकार को अधीन रे काम करिवार सुजोग पाइबा हेतु सप्ताह रे 5 दिन काम कली शनिवार और रविवार को उपभोग और उपयोग करिवार मौका पाइली घटनाक्रमे रामदुलाल सह भेट हला परे परे राजेंद्र चंदुलाल राजा सिंह विश्वामित्र सुनीता एवं अन्य माने देखा हेले दिल्ली देखिबा को इच्छा हला तेणु प्रत्येक शनिवार रविवार विभिन्न बाजार सहर तली बस्ती जाई लोकंक सह मिसी तांको सह कथा हे सेमानंटू किछि किछि बुझिली तांको माध्यम रे दिल्ली को देखिबा को चेष्टा कली एते प्राचीन जुगर कथा ओ इतिहास रे भरपूर हेतिबा महानगर को जेबे आखि फिटे छाती खोली देखिली तो लागिला चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भीतर देख कि नारा खारा एठु वासुदेव सुनानींकर आरंभ होईछि उपन्यास एथिरे 23 टी अध्याय अछि वासुदेव जहाँ देखिछंती जो माने जाइछंती जो मान संगे कथा होइछंती जहाँ पाई संपर्क अधिक होइछि सेई मानकर बेसहारा गरीबी निर्यातित जीवनर केतोटी फर्दर क्रमान्वय मसाणी सहर दिल्ली उपन्यास रे 23 टी अध्याय अध्यायर शीर्षक नामारू अनुमान करि हेबो अनेक कहानी रो कैनभास रो रूपरेख शीर्षक गुड़िक हेला एमाने मते पोसुछंती एमाने माने राधाकृष्ण शिव हनुमान इत्यादि फोटो मला गोरु को सुखिला हाड़ एटा होची रामदुलाल रो पिलादिन रो कथा बांझटा झियो जन्म करी मरुची रामदुलाल रो माई रो कथा मामू माई को कथा अब्बा जान महादयालु जे रामदुलाल को माने चोरी करिया पई जे कहउतला तार जो संग करीम तार जे गुरु जे माफिया मु चोर नुहे रामदुलाल कहउची सबु कथा पेट पाई जो पाई रामदुलाल आसिला सहर को सहर माँ बाप कई नांती आ गोटे अध्याय हारामी को औलाद एटा गोटे अध्याय बयस रे एठिकार ईश्वर तुमठु सान ये भी गोटे अध्याय धर्म उपरे नहीं महापुरु को छुई देले महापुरु मारा है जिवे एते सरी तते किए कला माइचिया परी दौड़ी पड़ाउछु काहे की सुखिला नई रे उछुला कोह हक खटिबी तो भिक मागिबी किया सबुठी अंधविश्वास राजुती चल आम गाँ को फेरी जिबा आज्ञा आपण ओडिया की प्रथमे भक्ति आसिला ना भोक एक जीवंता इतिहास अग्निपुंडुला से होचंती प्रोफेसर प्रभाकर दीप मशाणी उपरे ठिया होइछि सहर इतिहास पृष्ठा उल्टेबा को आमर समय नाही बेसहारा मनीष एबे मुहाइछि गाँ आड़को अर्धाधिक अध्याय बस्ती बासिंदा मोची रामदुलाल तार स्त्री छबेली और परिवार रो खतरनाक कहानी रो मर्मस्पर्शी वर्णना अवशिष्ट अध्याय अनुराग बुली जाइथिबा दिल्ली रो ऐतिहासिक कीर्तिराजी कब्रस्तान वगैरह से विषय अनेक तथ्यर अवतारणा अल्प समय पर से भेटिथिबा अनुसूचित जातिर खटिखिया वास्तुहरा श्रमजीवी प्रवासी चरित्र और परिवार रो संक्षिप्त परिचय और परिस्थितिर अनुच्छेद और टिप्पणी एवं शेष अनुराग मनरे सृष्टि होइथिबा प्रतिक्रिया प्रश्न संशय द्वंद्व और हताशार प्रतिफलन तथापि रामदुलाल और अनुराग भितरे सहृदयतार जो संपर्कटी गढ़ी उठिछि ताहा सेमानंक विचार बोधरे
परिवर्तन आनी पारिछि। आमे किछि चैप्टर रो किछि उद्धृति पढ़िबा। जेतेबेले जो रामदुलाल पिला दिन कथा ता बापा बैशाखू हाड़ी ताको बाड़ी बाड़ी मारदेले दोल पूर्णमी दिन। से विषयटा से केमती लिखिछंती। से दिन पोखरी रे गाधोई हाड़ बोझी शगड़ सह फेरुथुलु। पेटरे भोक, आमे किछि खाई नथिलु। सेपटे गाँव लोके होली रंग खेली खेली बाजा बजेई बजेई पोखरी को जाउथिले समस्ते गाधोइबा पाई। आमे तांको हाबुड़ी रे पड़ीगलु। अवश्य बापा चाहती ए हाड़ सबू पारु पर्यंत साधारण लोकंक सामना को न आसू, कारण पचा मांस गुड़ाक केतक हाड़े लगी थाए, फल दुर्गंध प्रचुर होता है। बापा चाहू नथिले जे लोके ए दुर्गंध को सामना करंतु। तेणु गाड़ी रखिला बेले हाड़ बोझेई शगड़ नेला बेले से सचेतन थांती एवं जो रास्तार लोकंक चल प्रचल बेसी अच्छी से रास्तार से नियंती नहीं। से दिन बेल उछुर हो जाए थाए। एई बेलारे पोखरी प्रायतः छिना छिना हो सारी थाए, किंतु होली बोली लोके एई उछुर बेलारे मध्य आसुथांती गाधोइबा पाई। आमको किंतु एसबु किछि जणा नथिला। देखु देखु भयंकर दुर्घटनाटी घटीगला। लोकंक हो हल्ला, बाजार शब्द इत्यादि ठारू आमर शगड़ गाड़ी को घुंचेइबा संभव नथिला। गाँ लोके तो उन्मत्त थांती। तेणु बड़ बड़ पार्टी रे कोलाहल करी बापा को खूब गाड़ी गुल्लज कले, ए रास्तार कहीं हाड़ आणुचु बोली। किछि पिला लोके समस्ते मिलमिशी एभली बागरे बापा को गोड़ेले पिटिबा पाई जे बापा दौड़िले। लोके दौड़ी दौड़ी बापा को माड़ मारुथांती। एने शगड़े लगी बलद दुईटी को मध्य कहीं कहीं घौड़ेबा फल बलद दुईटी दौड़ाक लगिले। रास्ता खूब असमतल थिला। सहजे तो आम बलद तर्किबा जंतु, तेणु शगड़ गाड़ी गड़ी जाई उल्टी गला। मु तो गाड़ी लोक आसवा आगु ओह्लई पड़ी माने बंधे गाधेबा परे परे हाँ गाड़ी पछे पछे चली चली जाऊली। बलद दुईटी मोड़ी ही पड़े खाल रे। गाड़ी समस्त हाड़ बिछे ही गला रास्ता सारा। लोके आहरी उत्क्षिप्त होई उठिले। गाड़ी ओलटी जीवा फल बाप माड़ खाई खाई पुणी फेरिले गाड़ी पाखक। दुर्भाग्य जे कई जने लोक भी बलद दुईटर रसी को फुटेइबाकू चेष्टा कले नहीं। माँ एपटे कांद बोबाड़ी छाड़ू थाए बापांकर माड़ खाइबा अवस्था देखी। बहुत कष्ट माड़ खाई खाई बापा गोटे बलद बेकरू रसी फिटेई पारले। आर बलद रसी लगी जाई गं गं हेउथाए, छटपट हेउथाए। बलदर अवस्था देखी बापा कांदी उठुथांती। सेठिकी जाई रसी फिटेइबाकू चाहूथिले मध्य लोकंक माड़ जोगु जीवाटा संभव होई पारु नथाए। जेमिति बलद पाटिरु आ नाकरू फेण बाहरिबा आरंभ कला, समस्त को आड़े घोषारी घोषारी दौड़ी गले। हेले आ बलदर रसी फिटेइबा पूर्वरु ही रसी द्वारा चेपी ही छटपट हेला मरीगला। एणे मला बेले बलद मुंडरे निज मुंड दे बापा कांदीबाकू लागिले। बलद मरीगला, गो हत्या करिदेला बोली सेठी बापा को लहुलुहान करी सबु लोक पिटिबारे लागिले। बलदर मृत्यु रे बापा भी उत्क्षिप्त होई जाइथिले। तेणु लोकंक माड़र प्रतिवाद करने को चेष्टा कले। हेले शह शह लोकर माताल क्रोध को बा केमिति प्रतिहत करि पारि थांते। उन्मत्त जनता आहुरी क्रोधित हुई पुणी जोर रे माड़ वर्षण कले। होली खेलर रंग रे बापांकर रक्तर रंग मिसी जाउथाए। उन्मत्त पागल माने शेष एभली माड़ देले जे बापा केतेबेले मरीगले सी भी जानी पारले नाही। शेष समस्ते बापांक मृत अवस्था देखी दौड़ी दौड़ी पड़े गले। आमर घर भुसुड़ी गला। बापा मले, आमको रोटी देउथुआ बलद मरीगला। माँ पुओ बेसाहारा होई गलु। एमिति भी आमर विशेष किसी संपर्क नथिला गाँ लोक मानक सहित। आम घर को कहीं आसु नथिले कि आमे भी कहा घर को जीवार सुजोग नथिला। आमको हाड़ बेपार करुछु, चमड़ा काटुछु बोली घृणा करुथिले। रास्ता सारा से दिन सेमिति हाड़ सब बिछे ही पड़ी थाए। गाँ कुकुर सेते बळकु दौड़ी आसी हाड़ को चाटिबा आरंभ कर सारी। काले बापा को कुकुर जेमिति मुह न लगांतु सेथिपाई माँ और मु बापा को अलगा करदेलु आमर बलद ठारू। माँ पाई आ मो पाई केही भी कम नथिले, ना बलद ना बापा। समान गुरुत्व थिला आम परिवार पाई। समान जंत्रणा हला दुई जनक विच्छेद रे। ना बलद को घुंचेई पारुथिलु, ना बापा को छाड़ी पारुथिलु। अनुराग को भारी छी छी लागिला सी से गाँव कुकुर जे रामदुलाल बापार सबू को चाटिबाकू जाउची और रामदुलाल घौड़ाउची। सी ही से टोका पथर ठेंगा जे रामदुलाल बापा को गोड़े गोड़े मारिछि। रामदुलाल जंत्रणा को काउपरी खुंपी जाउथबारु ताको अपराध बोध लागिला। रामदुलाल ता बिचरा एक नुआ जीवन रे बंचुछि।
से क्या ताकू तार पुराणा जंत्रणार इलाका को नहीं थोई देउछि और तार छटपट भाव को देखी आह करुछि। किछि समय ज्यादा साले पिटी पिटी करी मारी देले। अनुराग अनेला ताकू ता कपाଳରେ रिबी रिबी झाଳ फुटी थाए। खंडी कासटीए मारिला। हुए तो प्रकृतिस्थ हेबाकू चेष्टा कला। धीरे कहबाकू लागला कौन करवा साहब यही तो संसार। तापरे आमे आउ गोटे उद्धृति को जीवा जोटा होची एथरे गोटे तार विचार बोध केमती बदली देखा। सहर रो माँ बापा कहीं नहांती से सहर को आसी। अनुराग ता घर को जाइए रामदुलाल घर को सेठी कथा होछंती। रामदुलाल झील भी घरे अच्छी। अनुराग कहला अरे तमे एठिकार पुराणा लोक तुमको समस्त जानी जहाँ को भी पचारे तुम घर ठिकाना मिल जाउछि। रामदुलाल एभली प्रशंसामूलक कथा अनुराग पाखर शुणी सामान्य कुरुले उठिला और कहला हाँ साहब सबू दुकानी जानी आपण बाबू लोक तेणु जगटा अवश्य आपण को खराब लगुथिबो। अनुराग तमे कहू तमे रहुछ एठी सबुदिने दिने आसी मते काई खराब लागिबो। पुणी दोहरेला आमे आज्ञा छोट लोक आम सह लोक माने कथा बाक भी घृणा करती आ घर को आसी बसिबा तो दूर कथा। अनुराग कहला अरे रामदुलाल सही कथा नुहे एठी समस्त समान मनीष मात्र के ही सब समान आमे हूँ साधारण लोक तेणु ये बड़ सान प्रश्न आसला कौटू। रामदुलाल कहला साहब आपण केड़े बड़ ऑफिसर आ मु तो जोता सफा करुवा मोची समान हेलु केमिति। मु कहले अरे काम रे छोट बड़ कहीं नुहंती मु पाठ पढ़िली बोली चाकरी टीए पाइछि तुमे पाठ पढ़िलनी बोली जोता सफा करूछ किंतु आमे दुहे संपूर्ण एका प्रकार केमिति हला साहब। तुमको भोक लागे ना नहीं हाँ लागे। तुमको परिश्रम आड़े ना नहीं हाँ माड़े। तुम देहरु झाड़ बाहर ना नहीं हाँ बाहर। तुम निश्वास नेउछ ना नहीं हाँ निश्वास नेउछि। अनुराग कहला तुमको जेमिति आ जहाँ जहाँ लगे मत भी से लगे। रामदुलाल प्रश्न कला साहब मुझे बुझी पारनी ठाकुर लोक ब्राह्मण लोक तो बड़ बड़ जातिर आमे सेमानक सह केमती समान हो पारिबा। सेमाने बड़ बोली भगवान पूजा करूछंती आमे छोट बोली जोता सफा करूछंती एटा तो भगवान कर वरदान अटे। अनुराग केमिति रामदुलाल को बुझेइबा चिंतार पड़ीगला। तारे निरीह और निष्कपट तथा अपाठुआ विचार को खंडन करबा तापे काठिकर पाठ थिला। क्यों भाषा रे कहले बुझी पारिबो बोली से सहज रास्ता खोजी पाउनथला। एक्चुअली उपन्यास सरिला बेलू रामदुलाल रो विचार बोधर परिवर्तन आसी किंतु अनुराग से भली संशय और द्वंद्व भितर रही। शेष को जमती कहते राजकुमार सार शेष को रामदुलाल फोन करुच्ची भुवनेश्वर को फेरी आसी अनुराग फोन करुच्ची रामदुलाल को। रामदुलाल फोन उठौनी ता जीवन भितर से रही। तेणु रामदुलाल बर्तमान मंदिर सेकेंड आउ गोटे चैप्टर को आम जा यही सब आलोचना पर रामदुलाल टे गुम हो जाइए कारण ताको बुझेबा को चेष्टा कर सब मनुष्य समान जातिभेद किसी नहीं ब्राह्मण मैंने एमती कर स्वर्ग नक्षर हिसाब ये सब ताको अनुराग बुझे रामदुलाल को। अनुराग देखला जे रामदुलाल गुम हो जाता पाखे किसी भाषा नाला से जाने ये छोट जाति तार बापा को हत्या करागला ताकू विटामाटी छाड़ी यही अजणा सहर में रोटी खोजा पड़ा। शेष कहला साहब आपण ठीक कहते आमे मूर्ख लोक कौन जापर आज्ञा जी जमी बुझेला सेमती बुझी जाऊँ आपण सीना पढ़ा लेखा बड़ लोक बोली एत कथा बुझुंट और बुझाऊं भल है जे ठीक कथाटे कहले। पाखरे झील सब कथा को ठिया ही शुणुला तार भी मन पड़गला स्कूल कथा से छोट जातिर पिला बोली स्कूल ले अलगा बसा जाउथला। सरस्वती पूजा गणेश पूजा समय रे से मूर्ति छुइया को अनुमति नथिला। स्कूल रो झाड़ू काम से दि जाउथला हेले तांकर सहपाठिनी माननकु दिया जाउ नथिला। ए सब कथा को सी हाड़े हाड़े अनुभव करुथला बोधवे किंतु काहारी को कहिबार सुजोग पाउ नथिला। एते कथा सुनिला परे शिव पार्वती फोटो को धीर किना काढ़ी आनी तळे रखिदेला रामदुलाल झियो। बर्तमान आम देखा केमिति गोटे दिल्ली रो से बस्ती सहर को वर्णना करिसंती वासुदेव। अनुराग जीवाई उद्यत है जो घर को आसला रामदुलाल घर जीव। रामदुलाल कहला आसतु बाहर एक होटेल में कॉफी टिके पीवा। तांको घरे अनुराग चा पी थाए बहुत हुए कॉफी को चा ठारू रामदुलाल बेसी मान्यता देउछि तेणु जोर करी कॉफी पीवा पई कहूछि। अनुराग एथरे किछि प्रतिक्रिया नकरी हसिला एवं सम्मति जणाइला।
दुहे जाउथांती होटल को सेपटे रामदुलाल अनुराग को बतईदब मेट्रो स्टेशन आड़े घर गुड़ाक खुंदा खुंदी छोट छोट रास्ता दे जीवाक पड़ुଥାଏ केउठी पानी पचपच तो केउठी ड्रेन पानी केउठी स्त्री लोक बासन माजु थांती तो केउठी गाधो थांती कहा कहा घरे बाहर ही चुली जाळुछंती तो किए बसी दर्पण सामने मुंड कुंडौची एठी तथाकथित बड़ लोक पैसा वाला परिवार जहां से माने प्राइवेसी बोली कहती सेटा जमारू नाही एकदम खोला समस्त कार्यकलाप को समस्त अनुध्यान करें तेबे केही काहाकू अनांती नाही कि पचारती नाही समस्ते निज निज काम व्यस्त बाटर अनुराग देखला कई इलेक्ट्रिक स्विच तैयारी करूथांती केतोटी परिवार भी पांपड़ छाणुथांती तो कई ठुंगारे अठा लगौथांती अनुराग को लगिला जेमिति सहर तली ही सहर को बंची रखिछि एठी जहा जहा काम होइछि ता बड़ बड़ दुकान रे जाई बिक्री होइछि एठिकार अर्धाधिक लोक पुणी एम्स हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया डाक्तरखाना सफदरजंग डाक्तरखाना रे छाई जाइछंती समस्त डाक्तरखानार सफाई कर्मचारी एठी हूँ जाउछंती मने मने अनुराग भाविला एई माने जदि संगठित होई गोटे दिन काम करिबा बंद करदेवे ना सरकार दोहली उठिबो लोकंको कोलाहल रे हेले एमान कथा को केही बुझंती नाही सबु बेले केवल घृणा चक्षुरे ही देखिथांती नीच अस्पृश्य बोली केही आदर करंती नाही अथच एमिति देखा गले एमान श्रम न रहिले घर कोठा तैयारी हो पारिबो नहीं रास्ता घाट तैयारी हो पारिबो नहीं घर पाइखाना सफा हो पारिबो नहीं विवाह भोजी हो पारिबो नहीं विवाह बरजात्रीर लाइट जलिबो नहीं अंठा सेमती पड़ी रहिबो घर सामने महिला गदा रहिबो सुरेज सफा हेबो नहीं नाଳରେ पानी आसीबा बंद हो जिवो हाट बजार रे सौदा मिलिबो नहीं गाड़ी मोटर असभा रहिबो ऑफिस घर झाड़ू हो पारिबो नहीं एमिति केते केते अघटन घटी जिवो जनजीवन अस्तव्यस्त हो जिवो अनुरागर मुंड झिमझिम गला ए सब कथार सत्यासत्य परखा गले के जानी कहीं भीतर को बड़ विचित्र अनुभव माड़ी आसे एवं समाज नीति नियम को धिक्कार करने को इच्छा हुए यही अति सघन वर्णना बर्तमान आम टिके चेंज करवा परिवेश रु छबेली कथा कहवा जो रामदुलाल स्त्री कथा छबेली बाहाला पूर्व ता माँ अहल्या से झाड़ू काम करे झाड़ू बाली तार झील छबेली से जाकर काम करे अभिजात्य संपन्न सब धनी लोकंकर घरे से जड़े होउछन अमरजीत झील अमेरिका रहे सी ये एकुटिया रिटायर्ड हो रही रात मद पियंती छबेली आसी रोषे बस खाया दिए बेले बेले आमलेट दिए मद पीवाई से गोटे वर्णना करमती अमरजीत से सुजोग नेला निजर लालसा शोषण केमिति कला से संजय बेले पुणी राति 9टा बेले किए एते तते सरी कला ए अध्यायर ए विषयटी देखुन केमिति वर्णना करछंती वासुदेव संजय बेले पुणी राति 9टा बेले आसिला छबेली अमरजीत घर को आसिया पूर्व छबेली अन्य दुई घरर काम शेष करी आसिथाए सेते बेले अमरजीत प्रथम पेक सरी जाई थाए आसु आसु अमरजीत कहला मेरी प्यारी बिटिया गोटे आमलेट बनेबू ए काजू सह मद भल लगुनी छबेली कहला ठीक है मद गिलास रखा जाइथिबा टेबुल ले किछि समय पर डबल अंडार आमलेट टी तैयारी करी सेठी दीटी चामच सह थोइदला अमरजीत संगे संगे चामच रे टिके काटी खाइला और तारीफ करी कहला चमत्कार आहुरी दोहराई पुणी थे कहला बुझिलु छबेली तू जहाँ रांधि कर देले भी खूब सुस्वादु लगुच तेणु मु बेसी बेसी खाई दउछि पर पिंधिथिबा टी शर्ट को उठे पेट देखी कहला ये देखिनु पेट केमती बढ़ी गलानी एबे तो 6 मासर गर्भवती महिला परी देखा गलानी छबेली एक कथा शुणी हसीदेला सामान्य लाजई भी गला तापर छबेली हाथ को धरी पकई अमरजीत कहला छबेली ये तोर हाथ में जादू अच्छी गोटे थर छुईदेले सबू जंत्रणा छू मारी जाऊँगी आज टिके खसखस लगुच मत टिके मोड़ी दौनु एतक कही तार पापुली को आउंसीबा लगिला छबेली जुआन झील गोटे पुरुषर स्पर्श पाई ताकू भी केमिति केमिति लगिला ता पाटिरु किछि कथा बाहरला नाही ता हाथ धरी टाणी टाणी जेबे पाखरे बसई सामान्य कुंठी पकेला तो छबेली कुरुली उठिला ताकू शरम लगिला और अंकल जी संभोगरत रहिला एबे किछि मास गला पर छबेली गर्भधारण कला एक कथा अमरजीत को जमारू जणा नथिला जेबे सकाळे काम करी आसी बेसिन रे बांती करबा आरंभ कला सेतेबेले अमरजीत चिंक उठिला भाविला विपद हो गला ए विपद रु मुकुलिया पई से अहल्या को डाकी ताकू 2000 टका देइछि एवं अहल्या झियो को नै ता घर को जाइछि घर गला परे रिक्शा रे मां झियो घरे पहुंचिया परे घर भीतर जाई छबेली कहला अच्छा तोर मासिकिया एथर केबे हितला मार प्रश्नर उत्तर देवा पई छबेली भय पाई गला तथापि दोहराई की पचारिबरु एई मासरे हेइनी मां पुणी प्रश्न कला गला मासरे हेइतिला कि नाही छबेली पुणी कहला ना हेइ नथिला कांद कांद अवस्था पुणी छबेली मां पचारला तार मासरे
छबली कहला हेइथिला एतक सुनिला परे ता मां अधैर्य होइगला भयंकर भावरे म्रियमाण होई कांदीबाकू लागिला एवं कांदी कांदी लात विधा दी गोड़े पहाड़ पर पहाड़ खाली खुंदी देइगला माड़ और माँ झीर कांदणारे घर गरजी उठुए अहल्या एमिति माड़ मारू थाए जे सी निजे पिंधि कपड़ार जत्न नहीं पार नए बोली उलग्न प्राय हो जाए संपूर्ण उलग्न हो छबेली भूई रे गड़ी 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 पड़ी लुह और लहुरे जमी पहुँचू थाए अत्यधिक माड़ दे अहल्या हालई पड़ा झील पर गड़ी पड़ा कांदी कांदी एबे माड़ मारुनी हेले झील को कुंडे करी जोर जोर कांदीबाकू लगिला बाउनी बाउनी कांदुए तू कौन कलु एते सरी तते किए कला मते टिके कहलुनी क्या छवि को आउंसु थाए कुंडऊ थाए चुमा देउ थाए प्रचंड रोदन करू थाए एबे माँ झील दुहे मला मनीष प्राय भूई रे लुटी पड़ी थांती माड़पीट बंद हो जाए किंतु आखिर लुह तथापि बही चली चली माँ झीर मुंड को आउंसुची किंतु छबेलीर साहस होनी माँ को सामना करने को सी जंत्रणार छटपट हो जंत्रणा माड़र नुहे ये जंत्रणा अन्य कारण जनित छबेलीर पेट काटुची ताकू रिमझिम लगुची तलीपट एत काटुची जे सही होना सी माड़ खाऊला बेले जमती थिला एबे से सेमती रही पारना अंटा भारी जोरे बिंधुची सी स्थिर हो रही पारुनी मार माड़ जंत्रणा ठारू ये जंत्रणा अधिक एति बेले विकल है छबेली छबेली माँ को जल जल अने ए माँ कही ऊ आ करी अति विसहाय भाव रड़ी छाड़ा एत माड़ खाइबा सत्वे ऊ कि छू कर छबेली केमिति चिहिक उठी कलबल हो डाकी पारला जे अहल्या बुझी पारला ना संगे संगे उठी पड़ा एत हालिया हो जाता जे उठला बेले थरे दी थर पड़गला तथापि अहल्या भय पाईगला एवं बड़ लगे उठी पड़ा सी भय पाईगला जे छबेली को प्रचंड माड़ मारी माड़ जो तार विशेष क्षति ही ना तो कारण एमती कौन से शरीर जगह ना जो लात विधा न बर्षि जदि छाती बाजी जाइए तेबे किसी अघटन घटीजनी तो एमती एभली अनेक आशंका नहीं अहल्या उठी पड़ा दौड़ी जाई गिलास पानी आनी धरिकी आसला से पानी रे मुह को छिंची दे से पानी रे मुह को छिंची दे मुंडरे पानी मारिला मुंड को आउंसीबाकू लगिला छबेली केवल आखि को बड़ बड़ करी माँ को अनै रहिला झीर मुंडरे पानी दे दो अहल्या देखिला जे छबेली छटपट होउची साया उदा हो जाइए प्रथमे भाविला हुए तो माड़ जोगु झीटी मुति देइछि किंतु भल भाव देखिबार जनागला जे ये मूत नुहे केवल रक्त नुहे मुंडा मुंडा रक्त पिंडुला एबे छबेली आ उठी पारुनी हुए तो प्रचंड माड़ हेतु लात विधा पेटरे अन्य जगार लगी और छबेलीर गर्भपात होइछि गर्भपात को छबेलीर माँ खुशी रे ग्रहण कला कारण सी जेमिति अवैध छुआ को पेटरे धरी जन्म कला एवं एते बड़ करिछि सेही जंत्रणा से भल भाव जाने तेणु अंततः आज तार झील से कष्ट भोगब ना एमती तार अजाणत जे एते कथा होईगला तेणु ठीक कला बोली विचार कला अहल्या छबेली भी अहल्यार अवैध संतान थिला एवं अहल्या चाहून छबेली से भाई एक संतान जन्म करू अहल्या मरीगला परे छबेली झाड़ू काम कला झाड़ू बाली होईगला एवं से आत्महत्या करने को चिंता कलानी से जो रोला से देखिक से भाविला मुझे भितर जड़े मुझे सहित संग्राम करी कष्ट करी बंची रही एवं से स्थान रे जो स्थान मोचीशाला करथिला रामदुलाल से जगार ये झाड़ू भी मारे एवं तांको भितर गोटे संपर्क डेभलप कला केमिति संपर्कटा भितर हैला सर मन सर गोटे सेकंड टिके हां सर समय सरी जाउची केम करबे टिके एठी आज्ञा एटी 2 मिनिट रे शेष करिया को पड़िबो केमा करबे टिके समय सरी जाउची सारी होची धन्यवाद सर ठीक है छबेली केबे केबे रामदुलाल रो मोचीशाल को सफा कर दिए से स्वतंत्र भाव में सफा करे ता नुहे बरंग रास्ता रे अछि बोली स्वाभाविक भाव सफा हो जाए थरे रामदुलाल खूब खुशी हो गला कृतज्ञता जणाइबा को इच्छा कला तेणु दिने रामदुलाल निज आड़ू छबेली को कहला धन्यवाद मैडम जी छबेली चमकी पड़ला ए जाए ताको कहीं मैडम कही नांती आज सर्वप्रथमे मोची पिलाटी मैडम जी कही सी शर्मई गला एवं कहला मु मैडम जी नुहे झाड़ू वाली रामदुलाल प्रत्युत्तर कहला नाई आपण मो पाई मैडम जी देखंतु मुहेली छोट लोक मोर काम होला जोता सफा करिवा आपण बड़ रास्ता को सफा करूछंती बहुत परिश्रम करूछंती तेणु आपण मैडम जी छबेली कहला रास्ता जेते बड़ हो सेटा कोन मोर रामदुलाल टिके हसी दे कहला एका कथा मैडम जी जोता सफा करे सिना हेले मु केबे जोता पिंधिबार सुजोग पाइनी एही कथारु आमे जानि परिबा जो वर्गर लोकंकर कथा ये कह जाए और कहानी वर्णना करा जाए सेमानकर मनोवृत्ति कौन और सेमाने किए शेष
ଏଇମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଅନୁରାଗ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଅନେକ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫେରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା ବେଳେ, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ବିଚାର କଲା ସହର ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଅଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସହରର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗ ଅନୁରାଗର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଢିଙ୍କି ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟିବ। ଏମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ସହରକୁ, ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ସହରରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ହକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦେହ ମାଜୁଥିଲେ, ଝାଳ ବୁହାଉଥିଲେ ବୋଲି ରୁଟି ମିଳୁଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି କରିବେ ସେଇଠି ରୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସହରକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହର ଏମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କୁତୁବ ମିନାର, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍, ସଚିବାଳୟ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଏମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ କାନ୍ଥକୁ ଫଟେଇ ବାହାର କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଝାଳର ଗନ୍ଧ, ରକ୍ତ ଛିଟିକା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଅୟସର ଅହଙ୍କାର। ଅନୁରାଗ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାମଦୁଲାଲକୁ, ଅନୁରାଗର ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାମଦୁଲାଲକୁ। ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଦୁଲାଲ ଫୋନ୍ ଧରୁନଥିଲା। ରାମଦୁଲାଲ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ଅନୁରାଗକୁ, ଅନୁରାଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ରାମଦୁଲାଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you so much, sir, for bringing alive characters from the novel through your evocative reading. We shall now take a few questions from our viewers. Question, and I'll just read it out. Congratulations to the author and thanks for the wonderful session. So, could you tell us about your experience as an Odia writer residing in Delhi? See, whatever I have actually reflected in my novel, that is all my experiences. And when I came to Delhi, in fact, I have not come to Delhi to in order to write the novel. I have come for some other purpose, some different purpose. But when I came across with all these characters, particularly in first instances when I interacted with Ramdulal, then Ramdulal character actually instigated me, influenced me to interact with other people also. So my usual behavior is whenever I meet with any person, I wanted to interact with them. And in that process, actually, I interacted with Rajinder, I interacted with Ramdulal, I interacted with Jadav, and so many persons. And in that way, I thought to write a novel. Hello. Thank you for your response, sir. Thank you so much. So I think that's about it. We do not have any more questions. So once again, I would like to thank our eminent panelists who joined us today, who found time for us. It was a wonderful session. There was so much that we got to learn, and of course we got introduced to this deeply moving novel. I'm thankful to its author, Dr. Vasudev Sunani. My heartfelt gratitude to my teachers, Professor Sumanyu Satpathy and Professor Rajkumar, who I know are extremely busy. So despite their busy schedule, they managed to find time for us. I'm thankful in equal measures to the two writers who joined us today, Sri Bhima Prushti and Sri Manwa Das, for their contributions to the discussion. Thank you for reflecting on the text, and thank you, Sri Manwa Das, for your evocative reading. Thank you. So, okay, although there's just one more question before we wind up. This is by Dr. Subhash Patra, and I'll show it on the screen so that everyone can read. This is a question which is addressed to Rajkumar sir. Are only the makers of Delhi marginalized? I think irrespective of one's status, the makers large associated with any city, event or movement always go unnoticed. Yeah. I fully agree with you that the makers of any city or even village are marginalized. So it is not just in the case of Delhi. Delhi, just because we are
discussing a book on Delhi. That's why that I try to bring this that idea. But you are very right that wherever you go, wherever you see, that's why I could have elaborated it by saying that that who make the road, who make the railways, who make the that who produce foods for us, for example, the clothes that we wear, the that. So anywhere you go, it is not just that Delhi alone, but I will that go to the extent by saying that all over the world that you go, the workers, that I can ask you several questions, that while answering that, that wherever you see any kind of, that say, in Indian case, it is unique because, that in India, producers are not very sadly, that they are consumers. So that's where the idea of poverty, malnutrition, etc. But I am sure, that your viewpoint is taken into consideration that it is the workers everywhere that they are marginalized, whether it is India or abroad. Thank you. Thank you for your response, sir. Thank you, everyone. I would once again like to thank our eminent panelists, the author, the discussions. I'm thankful to our viewers who stayed with us, who joined us for this online event today. Uh, I hope all of you will read the book. Of course, there's so much that we got to learn today, but there'll be more that each reader will find out when he or she reads the book. Uh, Thank you so much. Bye. Thank you, Thank Sadhguru. you. Thank you all. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Thank you, everyone. Namaskar.